आप हमें इस वक्त रेडियो हमवतन पर सुन सकते हैं और नई दुनिया की तवज्जुह से आप हमें फेसबुक पर देख भी सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइव देखने के लिए आपको एक लिंक चाहिए होगा जो रेडियो हमवतन के वेब पेज पे आपको इस वक्त नज़र आ रहा होगा। उसको क्लिक करके आप फिर हमें लाइव देख सकते हैं। अम, हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी दुनिया के जिस हिस्से में भी इस वक्त होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन सामीन, हम सब जानते हैं, हम सब देख रहे हैं कि हर मिनट जो है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मरीज़ों की तादाद में पूरी दुनिया में इज़ाफ़ा हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हम मेडिकल एस्पेक्ट से बिल्कुल बात नहीं करेंगे इस वायरस के बारे में, क्योंकि आप सब लोग मीडिया के थ्रू बहुत अवेयरनेस इस वक्त तक रखते हैं अब कि ये वायरस है क्या चीज़ और इसके मेडिकल जो है सिम्टम्स क्या हो सकते हैं मरीजों में। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस से और कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं या कर रहे हैं। कौन सी दूसरी और ऐसी कंसर्न्स हैं जिनको हमें एड्रेस करना है। तो वो कोशिश होगी हमारे इस प्रोग्राम में कि हम वो डिस्कस करें। हमारी हमारी हमदर्दियाँ और जज़्बात उन सब मुल्कों के साथ हैं, उन सब मरीज़ों के साथ हैं, उन सब फैमिलीज़ के साथ हैं जो किसी न किसी तरह से इस वायरस से इस वक़्त जो हैं वो अफ़ेक्टेड हुए हैं। नाज़रीन सामीन, हम आज बात करेंगे कि ये केसेस इन इन्फेक्टेड केसेस में इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन एक पॉज़िटिव चीज़ जो हम आज हाइलाइट करेंगे और जो हम सबको याद रखना चाहिए वो ये है कि चाइना ने किस तरह से अपनी आवाम के साथ मिलकर इस जंग का मुकाबला किया। और हमने ये देखा कि उन्होंने एक बहुत ही उनकी आवाम ने एक रिज़िलिएंट तरीके से, एक करेजियस तरीके से, एक टेनेसिटी के साथ, एक एहसास ज़िम्मेदारी के साथ और एक ईमानदारी के साथ अपनी हुकूमत के साथ मिल के जो उन्होंने इक़दामात पेश किए, जो उन्होंने इक़दामात लगाए, उन्होंने उन पर अमल किया और वो इस वायरस पर काबू पा गए। तो इस तरह से और इस वजह से हमें ये चीज़ सोचनी है कि हम किस तरह से इस जंग में जीत सकते हैं और इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। और हमारी हुकूमत ने डेनमार्क में 11 मार्च को यहाँ पर बहुत सारे जो है हिफाजती तदाबीर और हिफाजती इक़दामात जो हैं उनको अनाउंस किया, जिनको डेनमार्क की पॉपुलेशन जो है, डेनमार्क के लोग जो हैं वो बहुत एक रिस्पेक्ट से जो है वो फ़ॉलो कर रहे हैं। जिनमें ये है कि हम अपने घरों तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी बाहर ना जाएँ, अगर ज़रूरी है तो जाएँ, लेकिन गैर ज़रूरी आप इज्तिमाओं से परहेज़ करें, बाहर मत जाएँ और यहाँ पर 10 लोगों से ज़्यादा अगर इज्तिमा बाहर हो रहा है तो उसकी इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा वक़फ़ा रखें और हम सुपरमार्केट्स में भी ये देख रहे हैं आजकल कि ये चीज़ बिल्कुल इम्प्लीमेंट हुई है, लोग इसको फ़ॉलो भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन सामीन, इस प्रोग्राम का जैसे मैंने बताया आज मौज़ू ये होगा कि हमने होप को तलाश करना है, उम्मीद को ढूँढना है और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस मौज़ू पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट शफ़क़त साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम और सुनने वाले और देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत सलाम। जी, जैसे कि आप सब जानते हैं नाज़रीन सामीन, शफ़क़त साहब जो हैं वो साइकोथेरेपी के सीईओ हैं और इस फ़ील्ड में बहुत आप माहिर रखते हैं और हम बहुत लुक फ़ॉरवर्ड कर रहे हैं कि आपकी राय भी हम इस मौज़ू के बारे में जानेंगे आज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वन्स अगेन कि आज शुक्रिया। आप आए हैं। इसके अलावा नाज़रीन सामीन, अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ एक गेस्ट अमेरिका से भी होंगे, प्रोफ़ेसर बिशॉफ, जो कि हार्वर्ड हाइंस यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं और उन्होंने बहुत सारी पेंडेमिक जो है वो देखी हैं। पेंडेमिक में क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और किस तरह से हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम ये दूसरे चैलेंजेस को, जिनको हम साइकोलॉजिकल चैलेंजेस कहते हैं, उनको फेस कर सकते हैं। उनके साथ भी हम ये बात करेंगे। तो शफ़क़त साहब, पहले तो आप ये बताएँ कि आपके लिए इन हालात में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ी चेंज क्या है आज? हुँ, देखें ये तो हर एक इंसान के लिए ये सरप्राइज़ है, ये जो जी, हुआ हमारे साथ और ये हमारे लिए जो हमारा आम दिन का जो रूटीन है वो
धर्म भरम हो गई है। बिल्कुल। इस वजह से हमें इसका इफेक्ट यकीनन है। और जिस तरीके से मैंने अपने आप को टैकल किया यहाँ पे, तो सबसे पहली बात ये थी कि मैंने कोशिश की कि इसको रोजमर्रा का जो दिन है उसको जितनी हद तक उसको मैं जारी रख सकता हूँ उतना मैंने उसको जारी रखा। जी। और वहां पे चेंजिंग लाइन जहाँ पे जारी नहीं रख सकता, काम के लिहाज से जाहिर सी बात है वहां पे भी कमी होगी। और घर आपको जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम गुजारना पड़ता है। और अगर आपने ऐसे माहौल नहीं बनाए हुए घर में जहाँ पे आपको जहाँ पे आप ज्यादा टाइम गुजार सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे फिर आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी। तो मेरे लिहाज से मैंने अब तक जो आम मर्रे के जो रोजाना के जो काम है वो मैंने कोशिश की है करूं। और जहाँ पे चेंजिंग लाई है वहां पे जाहिर सी बात है मैंने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया, बच्चों को इन्वॉल्व किया, ताकि वो भी जो है ना इस हालात से आगाह हो कि ये हमारे ऊपर मेंटली तौर पे सबसे ज्यादा असर जी, करती है। बिल्कुल। और ये आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात की शफ़क़त, के ये जो पूरा ग्लोबल क्राइसिस है, जो हम सब इस वक़्त फ़ेस कर रहे हैं, हर बंदा, हर मुल्क इस लपेट में है। अ, उसके जो फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स हैं, वो तो हम देख रहे हैं और दिल लरज़ जाता है जब हम उन सीन्स को देख रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर। जो जो मरीज़ आ रहे हैं, जो इन्फेक्टेड हैं, और डॉक्टर्स कैसे बहादुरी और एक पुरअज़्म तरीके से उस सब का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हमें आज ये भी बात एक याद रखनी है कि ज़िंदगी ने तो चलना है फिर भी, बिल्कुल और वो जो मेंटली इफ़ेक्ट हो सकता है, या जो मेंटल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उनको भी हमने प्रिवेंट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको भूलना नहीं चाहिए कि मेंटली तौर पे हम पे इफेक्ट करता है। कुछ बिल्कुल। लोगों को ऐसे इफेक्ट करता है जैसे कि कुछ लोगों को इफेक्ट करेगा ज्यादा तौर पे, कुछ को नहीं इफेक्ट करेगा। जी। 2001 में जब 9/11 का केसेस हुआ था तब तकरीबन 15% जो दुनिया की आवाम थी वो डिप्रेशन और स्ट्रेस और एग्जाइटी का शिकार हो गई थी। बिल्कुल। और ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं जी। पूरी दुनिया में, जी। वो जाहिर सी बात है वो 9/11 से बहुत ज्यादा हद तक है। बिल्कुल। तो हमें एहतियात करनी है उन लोगों की जो जी। ऑलरेडी एग्जाइटेड हो जाते हैं, जी। जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं और जो जी। ज्यादा स्ट्रेस के शिकार होते जी। हैं। उनके लिए हमने ज्यादा एहतियात करनी है। जी। कुछ लोग ऐसे होंगे मुआशरे में जो इजीली मैनेज कर सकते हैं। जी। और उन मेरे लिहाज से उनका एक फर्ज बनता है कि अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसी नेमत दी है कि वो इन हालातों में मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी बनती है कि वो जो लोग जो एग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के जल्दी शिकार हो जाते हैं, उनको स्पेस दें, उनको जगह बिल्कुल। दें, उनके हालात को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये एक आपने बहुत ही एक डीप बात की है शफ़क़त, और उसमें हम देख सकते हैं कि जब ये 11 मार्च को ये सारी हुकूमत, हमारी डेनमार्क की हुकूमत की तरफ से रिकमेंडेशंस आई कि हमने क्या करना है इस वायरस का मुकाबला करने के लिए। जिसमें तो ये देखा गया कि कुछ घंटों के 1 घंटे के बाद ही बिल्कुल। लोगों का हजूम लग गया जी। सुपरमार्केट्स में। और जो है इस चीज़ को काफ़ी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया गया। मगर शायद ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, और यही हम आज डिस्कस करेंगे कि हमें ये समझना है कि अगर लोग ऐसे बिहेव करते हैं तो उसके पीछे क्या वजह है। बिल्कुल। जानबूझ के कोई 20 टॉयलेट पेपर के हम्म। थैले तो नहीं भर के लेके बिल्कुल जाएगा ना? बिल्कुल। और आप ये भी देख लेंगे कि जो रिएक्शन है जो बिल्कुल। लोगों का वो सेंस नहीं देता। और एग्ज़ैक्टली। जब ऐसा रिएक्शन होता है जो सेंस नहीं देता, आप जी। टॉयलेट पेपर इकट्ठा कर जी। रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं जी। जो आपको कल को फायदा नहीं देगी। एग्ज़ैक्टली। और वहां से पता चलता है कि ये लोग एक्साइटेड हो जाते जी, हैं जी। और स्ट्रेस में आ जाते हैं। रैशनल सोच नहीं है वो, बिल्कुल उस वक़्त बिल्कुल। जो आप लेते हैं। एक सर्वाइवल सोच है। जी। और वो भी बिल्कुल। उसके लिए भी जगह है हमारे लिए, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं उनको जगह दें। इसलिए बिल्कुल। कि उनके पास सिर्फ यही एक कोपिंग स्ट्रेटजी है कि बिल्कुल। वो जो एंग्जायटी थी इनके अंदर इतनी ज्यादा हो जाती कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, बिल्कुल। वो फिर ऐसे काम करते। ये उनका एक सर्वाइवल रिएक्शन है। बिल्कुल। अगर उनके पास ये सर्वाइवल रिएक्शन ना हो जी। तो जाहिर सी बात है फिर उनके लिए वहां तक चली जाती है कि लाइफ एंड डेथ के दरमियान हो एग्ज़ैक्टली। जाता है। तो उनको हम जगह दें बिल्कुल। और उनकी सोच भी सुने और बिल्कुल। उनको गलत ना करें। इसलिए जब आप उनको गलत करते जी। हैं तो वो समझते हैं कि जी। हम गलत हैं और उनके लिए लाइफ एंड डेथ के जी। दरमियान ये बिल्कुल। काम चल रहा है। अगर हम उनको गलत करते हैं
तो जाहिर सी बात है उन पे क्या बीतती होगी, ये भी हम कई दफा नहीं एहतियात करते कि उन पे कितना कुछ बीतता होगा। बिल्कुल, आई थिंक ये पूरे इस क्राइसिस में जिसमें से हमें गुजरना है अब, बहुत सारी चीज़ों को सोचना है, अपनी वैल्यूज़ को याद रखना और सब्र और तहम्मुल के साथ हमने अंडरस्टैंडिंग शो करनी है, स्पेस शो करनी है और एक काइंडनेस का जेस्चर और एक सिंसेरिटी का, ऑनेस्टी का और रिजिलिएंट होना है हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। और यहाँ पे ये है कि हर एक इंसान, जब हम चले जाते हैं छोटे दिमाग में रिप्टिका दिमाग की तरफ, तो वहाँ पे हर एक इंसान सर्वाइव होना चाहता बिल्कुल है। सही। और कुछ लोग मेंटली तौर पे इतने प्रेशराइज नहीं होते जितने कुछ लोग होते हैं। तो यहाँ पे हमने समझना है कि हर एक इंसान सर्वाइव करना चाहता है और हर एक इंसान का अपना तरीका होगा रिएक्शन का। तो जो जिस तरीके से आप अपने आप को सर्वाइव करनी है, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरीका है, और भी बहुत से तरीके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम इसमें अभी और डेप्थ में जाएंगे, लेकिन आई थिंक समरी यही है इस सवाल के जो हम कर रहे हैं इसका, कि ह्यूमन बिहेवियर हर एक का डिफरेंट है। हमें समझना है ये एक ग्लोबल क्राइसिस है और इस वक्त हम सब एक्चुअली कनेक्टेड हैं। अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद आई थिंक हम एक कनेक्टेड होते हुए, ना कनेक्टेड होते हुए भी हम कनेक्टेड हैं डिजिटल एरा के जरिए। तो इस पे भी हम करेंगे बात अभी और थोड़ी सी मजीद। शफकत, अब हमारे गेस्ट जो हैं, आपको पता है आज के गेस्ट हमारे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो भी अमेरिका से अभी वो कॉल इन करेंगे, प्रोफेसर बरूश फिशॉफ, और ये हार्वर्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी में यहाँ वो प्रोफेसर हैं वहाँ पर, और इन्होंने पेंडेमिक काफ़ी रिसर्च भी की है और एक्सपीरियंस भी किया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर क्यों बदल जाता है ऐसे क्राइसिस में। और इसके अलावा ये इनके पास पीएचडी साइकोलॉजी में भी है और इनकी 6 बुक्स जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क के बारे में असेसमेंट करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम इनसे अब बात करेंगे, मेरे ख्याल में वो लाइन पर हैं, और फिर हम वापस आके उन्हीं की बातों को हम दोबारा से हम उनको एनालाइज करेंगे। जी, गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning, Professor Baruch. We are so glad and so happy that you could join us today, all the way from the US. Oh, thank you for inviting me. I think it sounds like you're providing a very valuable service to your community. So if I can help some, I'm happy to do that. Yes, sir. I think we can all play our role in this global crisis that we're all facing, and I think we're all in it together. So we're just trying to find ways of how to, face this crisis, and at the same time also keep the hope that there is hope as well. Mm-hmm. Yes. So thank you so much for joining us. I gave an introduction about you in Urdu to our viewers, so we can listen. The listeners can hear you on Radio Hamwatan, and at the same time they can also watch us in the studio and hear you on a global Nai Dunya news channel as well. So thank you once again for joining our program today, sir. Oh, very good. So the first question that we wanted to ask you was just to hear how you are holding up in this difficult situation in the US. We are also watching the news here in Europe. So could you perhaps share with us how things are in the United States at the moment? Oh, we have there are 330 million people here, each of whom has a somewhat different story. I think there are people, I think our greatest concern should go to the people who have particular challenges, who are, have compromised health, or who are taking care of people who have compromised health, who have relatives in distant situations that they're responsible for and don't have their usual access. I think among the people who are more fortunate, both physically and socially, if they have the resources, I think by and large, I see an awful lot of pro-social behavior, people trying to figure out how they can help one another, sometimes even falling over one another, trying to find out, multiple people trying to figure out how to get food to people who are
isolated in their homes and don't have the strength or the money or the transportation to get food. We got my university, Carnegie Mellon. I think many people in the scientific community saw this coming, 2 months ago, and so my university has had, I think, I'm proud of their planning operation. There was we've had real failures of national planning in the United States. So our medical personnel do not have enough personal protective equipment. My sister's a pediatrician in California, and she says the doctors are terrified because they're being required to work, and they're doctors, like yourself are, brave people. They'll do their duty, but my sister says they're going to work without the protection that the country and the institution owes them. So everybody has different strategies. So just one last example. So the university my university has shut down. There's no research anymore on campus. The campus, and so there has been a request from people who have labs in which they have personal protective equipment, wondering whether they could donate that equipment to people in our hospitals who are unable to protect themselves because of the poor national planning. Right. And so they're figuring out how to do that. There are people working on that this morning. So I can hear, sir, that there are challenges, and I think unexpected challenges that we are also facing in Europe, in a country like Denmark as well, where we also hear that if the cases keep rising in a very fast and unexpected speed, then there might not be enough hospital staff to take care of these patients. So I think it's a global, some commonalities here as well that different countries are facing. And then there is the big challenge as well of, how much people are understanding. Hopefully it's going very well in Denmark, where the population is understanding the importance of the precautionary measures. But I think it will take some time to get used to this to this new sort of lifestyle that we are waking up to. Thank you for sharing this, sir. So I was just wondering, does this stress you as well, this new sort of all of a sudden where we have to wake up and we're not allowed to go to work, and how I was just curious to hear how it is for me personally, or for people in general? Yes, how it is for you with all this changes, as you mentioned, in your university as well. So I appreciate being asked, because everybody has a different story. So again, the universities in the United States, I think the universities and the other technical organizations, I'm sure the pharmaceutical companies and the computer companies, that have been driven by science, have been ahead of the curve on this. They've been ready. I think to the extent that the United States is prepared at all, it's not because of our national government. It's because of efforts of local health departments and at universities, science-based firms. So again, my university, Carnegie Mellon, has been planning for 2 months. When they realized, and I think they only started to reveal their plans, maybe like 3 weeks ago. And so we are all set up to do distance learning, that all of our classes, we fortunately, coincidentally, had our spring break last week. So we were able to do, or the week before last, that we were able to do a lot of practicing so that we got the technology right. And we had the last week of distance learning with a lot of support, and it seems to have gone quite well. Right. I do undergraduate teaching, for which that's relevant, but I also have a number of graduate students and other people I work with. So we just continued our weekly meetings, by Skype or Zoom, and so it actually feels fairly normal. I mean, the work, and I think that everybody is finding that
the work is therapeutic in its way, that it keeps you occupied, Yes. and it reminds you that, that this will be a difficult time ahead, but, we, sort of hope, most of us, there will be life on the other side of it, and we will want to pick up all the things that were important to us. So let's keep them going. True. And there is another question from the studio. Hello, Dr. Bishop. It's Riaz. Actually, I'm psychotherapist. I'm host here. And I have a question. I've seen you have written a lot of books about risk management. And do you have any idea of the most difference in human behavior mentally in these cases? Well, So it has, the answer is complicated, but the way I would think about it as a decision scientist or cognitive psychologist is that we're the same people in all situations. We approach them with the same, education we've been fortunate to get, the social network that we're able to draw on, but our knowledge of different situations quite varies. So there are aspects of this situation where we need to very quickly learn some facts that we didn't know before. So one of the things that people like myself study are the mental models that people have for interpreting complicated situations in their lives. So for example, everybody has some mental model of how seasonal influenza works, and that would be the point of departure for people in thinking about this kind of for this virus, and that helps you a little bit. It's a virus, so antibacterial treatments won't help you. It's a virus, so it's spread from person to person. There's personal hygiene that people know, but don't always follow through the entire seasonal flu season, that all of a sudden becomes very, very important. This is a virus that is, however, that's much more potent than the seasonal one, and for which none of us has any protection. So the new things that we need to learn about the COVID-19, there's not that many. Mm-hmm. They're not that hard to understand, but we do need authoritative, technically informed people to give us that information. And if the communication is poor, then people start looking everywhere, and they go to poorer and poorer sources. They start believing things on Twitter. And so, centralized, authoritative, trusted communication is very important. And I think that getting that information is I think an important tool in calming our anxieties. The people say, really, there's only a few things that you need to know. Here's how you act on them, and that's reassuring. It's not reassuring when you hear, as we have in this country, national leaders contradicting the medical evidence. Yeah. And when you hear so if the Danish public health authorities are doing a good job of communication, then they've helped people to protect themselves, and I hope reduce the national anxiety level. Yes, sir. I mean, that is a very good point. And actually, in Denmark, we as a nation are quite satisfied and happy that the Danish government is very transparent and have been keeping us in the loop with everything, and that gives us a lot of calmness and satisfaction as well. My next question, sir, would be around your experience regarding the different pandemics. And I was just wondering, when you look at,
from the research that you have done in the different pandemics, how is this pandemic different from the ones that you have researched on previously? What makes this pandemic so different? Well, this one is different because it's actually happening. I mean, at the risk of being simplistic. So I study judgment and decision making, risk analysis, the quality of expert judgment, and the quality of lay judgment, which is. I've been very fortunate to work on a variety of different problems. My introduction to pandemics was an initiative organized by a noted physician and epidemiologist named Larry Brilliant, who runs an organization your listeners may be interested in finding out, called Ending Pandemics, which he leads with Dr. Peggy Hamburg, or Margaret Hamburg, who was the former head of our Food and Drug Administration. And Larry and his public health colleagues anticipated something very much like this about 15 years ago, when just before H5N1 appeared to be a problem. And they convened a meeting, they called it Pan Defense 1.0, and my colleagues and I helped with organizing the meeting by sort of organizing the information that is scattered over a variety of disciplines and finding out what people believed. And they were afraid that they knew that these are people who they know the public health situation, systems. They know the ways that governments respond to novel crises. They know the risks emerging from zoonotic diseases. So it was clear to them that it was just a matter of time until we had something like what we're experiencing now. So we had H5N1, where the virus saved the population, but took the pressure off the planning efforts. And so we did some research on how well people understood that. And we had H1N1 a few years later. And again, we had SARS before that, which revealed the vulnerabilities. Then we had H1N1. Then we had Ebola, each of which showed the vulnerability of our institutional response. And, and I would say in this country, particularly in the last three years, rather than increasing our capability to deal with pandemics, we have systematically reduced them. So we're in worse shape now than we were, 5 or 10 or 15 years ago. So I think public health people, in my experience, that public health people are among the most dedicated and bravest people around, but where they really become important is in situations like this. And I think they're underfunded and underrepresented. In terms of our research, so one of the things we've looked at is how well people can understand these novel things. And I think the general result, which is consistent with the basic research, that if new phenomena arise where technical information is needed, that and people are really interested, that they can figure it out. That I would never give up on the public. I would never assume, well, they can't stand it. They can't handle the truth. They can't understand these issues. I think the sort of transparency that you're describing, that the Danish authorities have, is absolutely essential to maintaining public morale, and it's absolutely warranted because the public can understand these things, even in situations where the communication starts out clumsily, as it often does. That eventually medical personnel, the news media,
somehow people figure it out. Yes, it can be sometimes a very fast process for some, but some it might be a little gradual. But I think you can get there eventually to understand what the message is about. And sir, talking about human behavior, there is so much in the media at the moment, and these are facts that you also want to understand and keep yourself updated. However, it can also lead to some stress, perhaps, or some anxiety. What would your advice be on how we could perhaps keep ourselves updated, and how much time should we spend every day to keep ourselves updated with the facts? So I am consuming this day and night because this is what I do. This is my profession, and which I'm so grateful to be able to talk to you and some of your listeners through their questions. In terms of understanding the virus, and really in terms of typically in terms of understanding, what the institutional response is, I think that people could find a very small number of trusted print sources. That's one or two national, one or two local, maybe one or two international. I think if you read them once a day, you'll probably get all the information that you need for any practical purposes. And that means if you can do that, so there's very little more that you will learn that of practical purpose if you read a few trusted sources. I recommend print sources because it's more efficient to read them, and also because there's research showing that that watching TV creates stress. That the two, I know of studies, there's a line of research done by some of my colleagues that finds that the two biggest predictors of stress are how vulnerable people are to begin with. So does this, are they already under stress? Is their health compromised? Have they experienced a related trauma? So how vulnerable people are in general is one predictor of the stress. And the second one is how much TV they watch, because the expertise of people, certainly in commercial television, is to keep you watching. So they want to engage your emotions and keep you watching through the next commercial. And even when they're trying to provide good information, that's their expertise. That's their business model. So print, you have more control over your emotions. And if you rely on print, trusted, responsible print sources, that also immunizes you against the rumors that, that are out on Twitter or, on social media, which are sometimes irresponsible, sometimes malicious, and so on. And then people can just use the social media for the social support that everybody needs in this situation. Right. Okay. That's very good advice, sir. We were also discussing a little bit, the panic buy and the human behavior again, that we have to show understanding of the different behaviors in these crisis situation as well. And we experienced also that there was panic buy as well in many countries. And we were just curious to hear your thoughts about this, that from a human behavioral perspective, why do we panic buy, and why do we buy the things that we might not be needing in this crisis situation? Yeah. So the way I see, the way I analyze it, as a behavioral scientist, is to some extent, there are certainly people behaving irresponsibly and people who are stressed out and doing things that they wish, that are perhaps inappropriate, like hoarding and so on. But I think that that's a minority of people. I think what's generally happened is that there was very poor advanced planning in many places.
both in terms of ensuring that we knew this. The scientific public health community knew that this was coming 2 months ago, and they knew that the only way we would get through it is by some kind of social distancing. And they had, that's why we, the officials, we elected them, they got appointed, we're paying them. It was their job first to ensure that the supply chain would be able to meet the demand, and then to communicate with people early enough that they could start to stock up, and then assure them that the goods would be in the stores. And I would say, I only know closely this country. There was a failure to adjust the supply chain. There was a failure to give people advanced warning. There was even when run on the stores began, there still were no assurances that the goods would be there in the future. So that's a colossal failure of leadership that put most people in a situation where they said, all of a sudden, I'm told I need to provide for my family, and as a responsible individual, I need to go and buy things. So really put people in an impossible situation. It created risks for people who work in the stores, for people who work in the supply chain. So so better planning, better logistics, better communication would have allowed people to behave in a calmer way. Right. Okay. Thank you. I have two more questions, actually. Sir, right now, I think most of the parents are working from home, and their children are also at home, and so new challenges and a new lifestyle, I would say. So could you give us any advice regarding how we as parents, because it's very easy to get irritated as well, and we are so close to each other now, which is also good, but so any advice on how we could collaborate better with our homegoing children at the moment? I think, we have 3 children, but they're all big now, so I don't know the current reality. And it's my sense from talking to people who have kids that there's an awful lot of shared problem solving. I think often using social media, that people are figuring this out, and some of the kids think, well, this is a big vacation, yes, big weird vacation, but they'll get over. I think I think the wisdom on this question is in the parents. Right. Okay. So it's up to the parents to find a way to. They will. They're I think so loving too. parents. We're all trying our best. Yeah, I have great confidence in them. Thank you. And one last question, sir, that we wanted to ask you was also your advice on how we can. Again, people are different. Some people are very resilient and are taking all this very nicely. Some are more vulnerable. Could you give us some advice around how we can maintain our stress levels at a very minimal level while we are going through this crisis altogether? So this is again not my expertise. Yeah. I think my observation from talking to people is that that in difficult times people find that there's a lot of social solidarity. It is increased if a country has and locale has competent leadership that treats everybody fairly. Treats it as though we're all in it together. Our local health department, the Allegheny County Health Department, put out a video announcing the beginning of the strong social distancing here. They were nice enough to
ask me to help them to edit it, to use some of my expertise. But the sentiments were all theirs, and it ends up with the head of our health department, our county executive, and a signer for people who have difficulty hearing. Giving very clear instructions, giving a very strong sense that they are of solidarity with the community, and they close with saying, "This period will be a test of our humanity. We are confident that we will all pull together and pull through this." So that's the kind of sentiment it would be good to hear from all of our leaders, followed by actions that are faithful to it. Absolutely. That is very beautifully said. And I think we are seeing great examples in all the communities as well, where everyone is reaching out to each other and trying to help, be there for each other. And I think you're absolutely right. We will get through this. Thank you so much, sir, for your time, for sparing your time on a weekend. We really appreciate you sharing your knowledge with us. So from our team in Denmark, Radio Hamwatan team in Denmark, and everyone else also that are listening right now, we want to thank you so much. And we all wish that America also gets through this crisis. Thank you, and I appreciate you inviting me, and best of health to all of you. Thank you so much, and likewise, sir. Thank you. Bye bye. जी शफकत, ये तो बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की, लेकिन मेरे ख्याल में एंड में जो उन्होंने बात की है वो यही है कि हम इस क्राइसिस से सब निकल जाएंगे, और बड़ी ही इम्पोर्टेंट उन्होंने बातें मेरे ख्याल में मुख्तलिफ किस्म के एंगल से की। तो अब शफकत, बात ये आ रही है बार बार कि अभी हमें अपने जो है एक नई लाइफस्टाइल को अब देखना है और मोमेंट में जीना है, प्रेजेंट में रहना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखें, इस वक्त बहुत से लोग एंग्जाइटी में जो चले जाते हैं वो फ्यूचर के बारे में देखना शुरू करते हैं, आने वाले वक्त में क्या होगा, और आने वाले वक्त ना मैं जानता हूँ ना कोई और जानता है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर हमारी सोच चली जाती है आने वाले वक्त में, तो हमें कोशिश करना चाहिए इस वक्त में, इस मोमेंट को हम देखें, अपने आप को देखें कि इस वक्त मैं किस हालत में हूँ। अगर आप थोड़ी वक्त के लिए अपने आप को इसी वक्त में रोक लें, और अगर आप सोचें और ग्रेटिट्यूड की तरफ जाएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, हेल्थ हमारी ठीक है, खाने की प्रोवाइड हमें हो रही है, जो कनेक्शन लाइंस हैं वो चल रही हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह और भी मुल्कों में चल रही हैं, तो हम मैनेज कर लेंगे। और अगर आप आइसोलेटेड अपने वक्त को देखते हैं, इस वक्त हालात को देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास सब कुछ है, तो इंसान की जो एंग्जाइटी इंशाल्लाह वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जितना हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे उतना हमें नजर नहीं आएगा कि आने वाले वक्त क्या करेगा। तो हमें इस वक्त को याद रखना चाहिए। और एक हदीस भी है, एक सहाबी आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो ऊँटनी लेके आते हैं अपनी, तो वो कहते हैं कि मैं इस ऊँटनी को यहाँ पे छोड़ जाऊं और अल्लाह के हवाले कर दूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, पहले तुम इसको बांध दो, और अगर आप बांध दोगे तो उसके बाद आप अल्लाह ताला के हवाले कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है कि हम अपने प्रिकॉशंस लें, हर अपनी तरफ से अपने लिए जो बेहतर है वो हम करें, और उसके बाद तवक्कुल तो अल्लाह कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक माइंडसेट की बात है शफकत, जो हमने यूज टू करना है, और मेरे ख्याल में शुक्रगुजारी के लिए भी शायद कभी कभार टाइम चाहिए होता है आपको कि बैठे, और शायद वो मौका अब थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है कि घर पे रहकर हम शुक्र करें कि हमारे पास, शुक्र अदा करें कि हमारे पास फिर भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। और शुक्रगुजारी हम उस लिहाज से कर सकते हैं जब हम थोड़ी वक्त के लिए बैठते हैं, अपने साथ वक्त गुजारते हैं। और इस वक्त में अभी भी हम बात कर रहे थे कि आपने सवाल किया कि माँ बाप घर हैं, बच्चों के साथ आपको वक्त मिलता नहीं मिलता, और उस दौड़ में हमें वक्त नहीं मिलता, ना हम वक्त निकालते हैं। ऐसे नहीं लगता कि रोबोट की तरह की जिंदगी हमारी है, हम एक रोबोट की तरह चल रहे हैं बस वो सारा। तो शायद ये एक, क्योंकि देखिए ये क्राइसिस तो एक बहुत आ चुका है, और बहुत ही ये एक दिल लरस जाता है दोबारा से जो हो रहा है, जिसके बारे में हम आज बात नहीं कर रहे, लेकिन हमें बहरकफ एक उम्मीद के साथ जो है वो निकलना है, क्योंकि उम्मीद यही चीज देती है ना, हमें होप देती है कि कल के आने वाले जो दिन है वो हमारे जख्मों पे मरहम लगाएंगे। तो इसमें क्या आप कहेंगे शफकत की, जो बच्चे घर हैं, अब वो जो चैलेंजेस हैं हमारे पास कि हम सब इतने इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत प्यार है वहां पे थोड़ी बहुत
जाहिर सी झगड़ा बात तो है। नहीं कहूंगी, हाँ, लेकिन इरिटेशन हाँ, और वो तो इरिटेशन फिर आती है इससे कि हम आप यूज्ड टू हैं, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में आप 8 घंटे काम पे जाते हैं, नॉर्मली 8 घंटे सोते हैं, जी, उसके बाद फिर भी आपके पास अच्छा भला टाइम बचता है। बिल्कुल। और 8 घंटे अगर आपने बच्चों के साथ रहना है, जहाँ पे आपने कॉलेज या स्कूल के काम भी करने जी, हैं और उसके साथ आपने बच्चों को एक्टिव भी करना है। जी, देखिए, बच्चों का नेचर है कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से जी, एक्टिव होना है जी, फिजिकली, और अब अगर हम उम्र में ज़्यादा चले जाते हैं, हम फिजिकली इतने एक्टिव नहीं होते, बिल्कुल। तो इरिटेशन होती है, सवाल होते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, जो एंग्ज़ायटी बच्चों के अंदर पैदा होती है, वो हमें समझना चाहिए कि वो किसी वजह से है, बिल्कुल। और हमें अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए, जी, उनके जितने भी सवाल हैं, हम उन अच्छे तरीके से उनको जवाब दे जी, सकें। बिल्कुल। इसलिए जो कोपिंग स्ट्रेटजी जो बच्चे इस वक़्त ले रहे हैं, वो माँ-बाप से ले रहे हैं, हुँ, और माँ-बाप अगर स्ट्रेस आउट होंगे, तो हुँ, ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे भी जो सी उनकी कोपिंग स्ट्रेटजी जो कि हमें स्ट्रेस आउट होना चाहिए, हुँ, ऐसे हालात में। हुँ, तो हमें एज़ अ पेरेंट्स ये सोचना चाहिए कि हुँ, हमारे बच्चे हमसे बहुत कुछ सीख रहे हैं इस वक़्त पे। बहादुरी भी हम दे सकते हैं उनको, बच्चों को इस बिल्कुल, वक़्त बिल्कुल कि बहादुरी भी कैसे। दे सकते हैं कि ये वक़्त है, और हम एज़ अ पेरेंट्स हम बच्चों को भी ये कर सकते हैं कि वो भी अपने वक़्त को ग्रैटिट्यूड हुँ, शुक्रगुज़ारी करें हुँ, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुँ। पास सब कुछ है, क्योंकि हम हम एक बड़ी फ़िक्र करें। सादा ज़िंदगी की तरफ इधर इधर आ गए हैं वापस अब, बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल। हमें घर बनाना है, खाना जी, कोई हेल्प नहीं, हाँ, बिल्कुल। एक द पूरा दिन का सिनेमा नहीं जा सकते, सनमानी शॉपिंग है। मॉल नहीं जा सकते, बिल्कुल, आइसक्रीम खाने मतलब हुँ, शॉपिंग सेंटर के अंदर नहीं जा सकते। वो एक बिल्कुल। पूरी हम एक सादगी की हाँ तरफ जी। हम अ, बाउंड्रीज़ बन गई हैं, और हुँ, हमें हमें साथ-साथ ये भी सोचना है कि हमें जो गवर्नमेंट हमें रूल्स कह रही है, हमें हर सूरत उनको फ़ॉलो करना है। जी बिल्कुल। लेकिन उनके अंदर रह के भी बहुत से अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जी, बच्चों के साथ आप बाहर जा सकते जी हैं, बिल्कुल, और आप ज़ाहिर-सी बात है डिस्टेंस रखें और अपने बिल्कुल, प्रिकॉशंस लें, बिल्कुल, ताकि आप अपने आप को इतना आइसोलेटेड ना कर दें कि वो बिल्कुल, फिर मेंटली तौर पे आपको बिल्कुल। नेगेटिव इफ़ेक्ट बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल, वॉक आप हाँ, करें और हाँ, 2 बिल्कुल। मीटर का फासला रखें, लेकिन एज़ अ हाँ, फैमिली तो आप बाहर जा सकते हैं, 10 बिल्कुल। लोगों पर है यहाँ पर हाँ जी, पाबंदी। पाबंदी बिल्कुल। तो ये है कि हुँ। और ये इस सारा चीज़ का कुछ। ध्यान रखना है कि जो जैसे आप रोज़मर्रा के दिन में आपने जो चेंजेज़ लाई हैं अपनी ज़िंदगी में इस हुँ, कोरोना वायरस के हुँ, पीरियड के हुँ, दौरान, आप ये एहतियात करें कि कितने आपने चेंजेज़ लाए हैं और वो आपको किस तरह इफ़ेक्ट कर रही हैं हुँ, नेगेटिव। हुँ, अगर वो ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रही हैं, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको एहतियात करनी है कि वो हुँ, हमें और नेगेटिव जगह हुँ, की तरफ लेके जा जैसे सकती ये है, टीवी का स्ट्रेस। बताया आज बिल्कुल, प्रोफ़ेसर साहब बिल्कुल। ने कि टीवी जो है वो हुँ, एक्चुअली एक स्ट्रेस फैक्टर है, क्योंकि टीवी वालों का भी एक कमर्शियल इंटरेस्ट होता है कि वो बिल्कुल, आपको जोड़ के रखें, बिल्कुल, ग्लूड बिल्कुल। रखें टीवी हाँ के जी, आगे। तो तो हमारे चैनल्स बिल्कुल, और पाकिस्तान के भी। पाकिस्तान के भी जी, वो यहाँ के भी चैनल्स जी, करते हैं ये। जी, तो हमें उन्होंने खुद बैलेंस ढूँढना है। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा प्रिंट मीडिया वर्सेस टीवी। ये भी कहा उन्होंने, जी बिल्कुल। प्रिंट मीडिया की तरफ उन्होंने इसलिए कहा कि वो आप खुद कंट्रोल करते हैं। हुँ। तो यहाँ से ये भी हमने सोचना है कि जो हुँ, सोशल मीडिया है, हुँ, कहाँ से हम फिर इन्फॉर्मेशन ले हुँ, रहे हुँ, हैं हुँ, और कौन-सी इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं। अगर आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी हुँ, बात है आपको जो नेगेटिव वाला सिलसिला है, हुँ, वो और ज़्यादा, और आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ेगी। हुँ, आपने उसको कंट्रोल करना है। बिल्कुल। और अगर आपने न्यूज़ लेने हैं, तो वो भी कह रहे थे कि आप उसको भी बाउंड्रीज़ रखें। हुँ, मेरा मेरा सोचना ये है कि दिन में 1 न्यूज़ काफ़ी है। उसके हुँ, बाद आपको जो मेन न्यूज़ है, वो आपको मिल जाएँगी। और हुँ, कहाँ से आप न्यूज़ लेते हैं? हुँ, आप गवर्नमेंट की जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हुँ, वेबसाइट्स हैं, वहाँ हुँ, पे आप न्यूज़ लें, इसलिए वहाँ पे हुँ, प्रॉपर न्यूज़ मिलेंगी। लेकिन अ, हमने तो पाकिस्तान की भी फ़ॉलो करनी है ना अब। हाँ जी। तो ये है कि हाँ जी, अब 2-3 तक बंदा रखे, हाँ, बिल्कुल। जो है वेरिफाइड। वेरिफाइड जो 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 आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, उस तक फ़ेसबुक का रखें। ना इतना, क्योंकि वहाँ पर नहीं, हर किस्म की इस वक़्त हाँ, न्यूज़ का इन्फ्लक्स बिल्कुल, है। बिल्कुल, और आपको जो गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आप जितना आपको प्रॉपर नॉलेज होगा, उतना आपके लिए आसान होगा उस पे हुँ, प्रिकॉशंस हुँ, करना। अगर आपको नॉलेज गलत तरीके से हुँ, मिलेगी और गलत हुँ, नॉलेज मिलेगी, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आप प्रिकॉशन उस हुँ, हिसाब से करेंगे, हुँ, और वो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट कर सकते हैं आप हुँ। पे। और जी, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात करते हैं शफ़क़त, जो कि हमारी हुकूमत की तरफ से भी जो है ये आ रही कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और जी, बाकी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो तो बिल्कुल। हम जानते ही हैं। हुँ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये एक ये हुँ, मुझे तो लग रहा है जब मैं देखती हूँ कि हुँ। बहुत लोग अवेयर हैं हाँ जी। कि आपको एक डिस्टेंस डिस्टेंस रखना है। हाँ जी। और ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये किसी वजह से है, बिल्कुल। हमने अपने आप को बचा के रखना है। और लेकिन अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ से देखते हैं, तो हमें अगर हम उस तरफ देखते हैं कि हमें डिस्टेंस करना है और अपने आप को आइसोलेट करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आप वो रास्ते नहीं देखेंगे जहाँ पे आप वैसे अपने आप को ज़रूरी नहीं कि आइसोलेट करें। हमारे पास मीडिया है, हमारे पास फ़ेसबुक है, हमारे पास और भी व्हाट्सऐप है, जिस तरीके से हम एक-दूसरे के साथ मिल सकते हैं। आप
गेम्स खेल सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, आप बहुत से काम कर सकते हैं, बच्चे करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत सी गेम्स हैं जो अपने दोस्तों के साथ घर बैठ के खेलते हैं। और मुझे लगता है कि हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम एक्टिव हों दूसरे तरीके से, अपने आप को आइसोलेट ना करें। नहीं कनेक्टेड रह सकते हैं हम बिल्कुल, बिल्कुल। फिजिकली ना मिलके भी। बिल्कुल। और किसी ये को भी नहीं पता socialize कि है। एग्जैक्टली और वही वाली बात जो प्रोफेसर साहब भी कर रहे थे कि अनसर्टेनिटी है इस वक्त, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो ये तो वक्त ही बताएगा हाँ कि जी। कब हम इस क्राइसिस बहरान से इंशाल्लाह ताला हम निकल आएंगे। इंशाल्लाह निकलेंगे। लेकिन ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के हमने बिल्कुल। अपनी होप को जो है वो जी। बरकरार रखना है। और अगर चाइना निकल सके तो हम बिल्कुल, सब हम भी भी निकल निकल सकते हैं। जी। लेकिन वही वाली बात है कि हमें अपनी हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना है और बिल्कुल। समझना है उनकी स्ट्रेटजीज को, बिल्कुल। कंप्लेंट नहीं हाँ जी। करना। और वो ये भी कह रहे थे ना कि हर गवर्नमेंट की अपनी-अपनी स्ट्रेटजीज है। बिल्कुल। और उस लिहाज से भी हमें ये देखना है कि इस वक्त हम डेनमार्क में रह रहे हैं। जो गवर्नमेंट में जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, वो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने डेनमार्क की हिसाब से बनाई है। बिल्कुल। और अगर कोई और मुल्क है जो इनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, इसलिए उन्होंने अपने मुल्क के मुताबिक बनाई है। तो हमें जो हुक्मरान है उन्होंने कोई वजह है जिस वजह से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। और फिर ही हम एक डिसीजन जो मेकर्स हैं और जो डिसीजन टेकर्स हैं, मेरे हाँ ख्याल जी। में उन दोनों को मिल के काम करना है बिल्कुल, इस वक्त एक हिम्मत और हौसले के साथ। जी। तो शफकत ये बताएं आपको कौन सा चैलेंज है इस वक्त? इस वक्त सबसे बड़ा आपका चैलेंज? हाँ जी, आप चैलेंज कह रही हो, मैं तो खैर चैलेंज को इतना मानता नहीं हूँ, इसलिए हर एक मैं प्रॉब्लम्स भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ Ulfordringen, हर जी। Ulfordringen को हल करना है। हम्म। और हकीकत में माने इस वक्त अगर किसी चैलेंज को देखूं, तो मैं ये कल बैठा हुआ था और सोच रहा था कि क्या मैं स्ट्रेस्ड हूँ इस माहौल से, और मैं थोड़ा-सा एक्साइटेड था, न्यूज़ देखता था और फ़ॉलो करते थे कि क्या हो रहा है, कितने लोग हैं इन्फेक्टेड हुए हैं, कितने मरे हैं और मुल्क के अंदर किस तरह चल रहा है। तो ये कल ही जो है मैंने अपने रिफ्लेक्शन की इस बारे में कि क्या मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस की तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं जा रहा था अपनी थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी की तरफ, और मैंने उसको रोक लिया वहाँ पे। मैंने अपने आप को थोड़ा-सा उस लिहाज से आइसोलेटेड कर दिया। और इस प्रोग्राम की मैंने तैयारी की, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर मैंने देखा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने इस लिहाज से फिर अपने लिए एक रूल्स बना लिए कि दिन में एक दफ़ा न्यूज़ देखनी है मैंने, दैट्स इट। और जो ज़रूरी नॉलेज होगी वो मुझे मिल जाएगी। मीडिया, जो सोशल मीडिया है, फ़ेसबुक हो गया, जो भी हो गया, उसपे मैंने कम एक्टिव होना है। फ़ोन आपको बताता है कि आप कितने टाइम आप करते हैं उसको फॉलो, मॉनिटर, वो जो हाँ है जी, प्रोग्राम वो उसमें? ऑटोमेटिकली आता रहता है। तो बड़ी हिम्मत वाले हैं आप। हाँ जी, तो उसको मैंने कहा कि मैं इसको मॉनिटरिंग करूँ ताकि मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ। सही। आपको नहीं पता चलता, अचानक आप चल पड़ते हैं। बिल्कुल सही। तो उस लिहाज से मैंने इन चीज़ों पे थोड़ा-सा फ़ोकस किया कि ये चल रहा है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के हिसाब से तो मेरे बच्चे थोड़े इतने तंग नहीं करते, बड़े हो गए हैं। एक जी। छोटी बच्ची है जी। जो देखती है कि मैं घर हूँ, जी। तो उसके साथ अब आजकल थोड़ी-सी गेम होती है। जी। और ज़ाहिर-सी बात है जब ज़्यादा वक़्त हो जाता है तो जी। फिर आप किसी न किसी तरीके से आप उसको जो है ना कहते हैं कि अब आप अपनी गेम्स खेलो, अब मुझे अपना वक़्त चाहिए। बिल्कुल। तो ये भी ज़रूरी है, आप बच्चों को भी बताएँ कि आपको अपना वक़्त भी ज़रूरी है। सिर्फ़ जी। बच्चे नहीं रह जाते, आपको अपना भी है। जी, बिल्कुल। अगर आप अपने आप को सेफ नहीं करेंगे, अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे, तो फिर आप दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। तो और आई थिंक ये पूरे इस क्राइसिस में हम एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी निकाल सकते हैं। यही जो आप बता रहे हैं कि अपने ऊपर वक़्त मिल गया है हमें थोड़ा काम करने के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जी। और नई रूटीन्स बनाने के लिए भी शायद हमें हाँ, एक बिल्कुल। क्योंकि हमने गुज़रना तो है इस जी, टाइम से हर बिल्कुल। हालत में, और शायद बच्चों को भी ये हम बता सकते हैं इस वक़्त, क्योंकि ये बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। शफ़क़त, हम ये शायद पता नहीं कब, ये तो हम इस वक़्त पार्ट है ना, जैसे हाँ जी। प्रोफ़ेसर साहब ने भी कहा कि हम इस वक़्त हिस्सा इसमें से है गुज़र रहे हैं, हिस्सा बिल्कुल, है, हाँ जो जी। कि कल को हिस्ट्री बन जाएगी। बिल्कुल। तो बच्चों में भी इसमें बहुत लर्निंग है बिल्कुल। कि उनको हम बता सकते हैं कि दूसरों की खातिर हम ये कर रहे हैं। जो सेल्फ जो सोशल डिस्टेंसिंग है और घर में रहना है, वो उन लोगों के लिए है जो वल्नरेबल है हमारे जी। सोसाइटी में, हम उनकी हिफाज़त करना हाँ, चाहते हैं। बिल्कुल। अपनी हिफाज़त के साथ-साथ जी। उन लोगों की जिनकी सेहत ठीक बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। और अगर उनको वायरस हो गया तो वो हाँ, उसका ये भी मुकाबला ना कर पाएँगे। बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम एक अपने आप को सेव करें, लेकिन बिल्कुल। साथ-साथ हम अपने एल्डर्स को भी सेव करें बिल्कुल, बिल्कुल। कि उनका हमने ख़ास ख़्याल रखना है बिल्कुल। कि उनको ज़रूरत है। और उन्होंने बात की थी कि फूड का मसला था, जी। आइसोलेटेड हो गए हैं और वो जो लोग उनको कैसे फूड मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बहुत से लोग
मदद कर रहे हैं लोगों की, Absolutely. खाना दे के आ रहे हैं जी। और शॉपिंग कर लें उनके लिए। जी, मैं आज पढ़ रही थी सुबह यूएस में भी कोई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को खाना सिर्फ वो लंच में स्कूल की तरफ से मिलता है। कुछ ऐसी हैं फैमिलीज़ जो वल्नरेबल हैं, हुँ, तो बहुत सारे लोगों ने फ्री खाना जो है बिल्कुल। बाँटना शुरू कर दिया। तो बहुत ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मिल रही हैं हमारी कम्युनिटी जिसमें लोग बहुत हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और हेल्प कर रहे बिल्कुल, हैं। तो ये बहुत सी अच्छाई है जो हमारे जी, अंदर है जी, और यहाँ से पता चलता है कि इंशाल्लाह हम सारे मिल के जी, इस वक़्त से निकल आएँगे। जी, हमने बस एक दिन एक दिन जी, लेना है जी। और दूर तक नहीं सोचना। जी, और अपने सारे वो काम करके जैसे आपने बताया अभी हदीस का भी हवाला दिया, सब कुछ वो करके फिर अल्लाह पे छोड़ देना है। बिल्कुल, उसके बाद फिर बिल्कुल, पूरा यकीन रखना है कि एज़ अ हम मुसलमान हैं और हम बिल्कुल, बिलीव करते हैं कि अल्लाह मियाँ जो हैं वो हर इंशाल्लाह, चीज़ पे वो कादिर हैं। बिल्कुल। तो आखिर में ये बताएँ फिर शफ़क़त भाई कि कौन-सी चीज़ आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इस पूरे जब क्राइसिस खत्म हो जाएगा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? देखिए हम जो वक़्त होता है उसको हम यूज़्ड टू हो जाते हैं और हर चेंजिंग आती है। अब जी। ये चेंजिंग आई है, हम इसके यूज़्ड टू होना है बिल्कुल। और जब ये चेंज होगा तो फिर हमें दूसरे काम के लिए वापस जी, यूज़्ड टू होना बिल्कुल पड़ेगा। सही। जैसे आप हफ्ते की छुट्टी करते हैं, काम बड़ा मुश्किल लगता है, जी, तो अब जो वापस काम आएगा। देखिए मुझे लगता है जो मैं सबसे मेन चीज़ है कि ये जो एंग्ज़ायटी है और ये जो 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 लोग फ़ौत हो रहे हैं इस वक़्त पे, जी, कि ये जो है ना मीडिया के लिहाज से जो है ना कम हो जाएगा तो ताकि हम एक दूसरे के साथ सोशल तरीके से मिल सकें बिल्कुल। और ये जो हमारा गैदरिंग होती है बिल्कुल, खासकर जो नमाज का सिलसिला है जो बिल्कुल, जुमे की नमाज होती है बिल्कुल, उसके लिए मैं बिल्कुल, इंशाल्लाह ये वक्त बिल्कुल, वापस आएगा तो बिल्कुल किसी और और तरीके आज़ादी से कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल ये बिल्कुल ये भी हम्म, बंदा सोचता है कि आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है बिल्कुल जिसका एहसास तब होता है जब वो छिन जाए आपसे हाँ बिल्कुल तो नाज़रीन सामीन हमारे प्रोग्राम का वक़्त अब ख़त्म हो रहा है और बस हम यही कहना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में हमने कोरोना की जो मेडिकल पर्सपेक्टिव है, एंगल है वो डिस्कस नहीं किया। दिल लरज़ जाता है देख के जो हो रहा है इस वक़्त उन 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 मरीज़ों को उन उस एस्पेक्ट से हमने इस प्रोग्राम में नहीं डिस्कशन की। मकसद आज हमारा ये था कि बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं जिनको हमें एड्रेस करना है, याद रखना है और इस वक़्त को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं माइंडफुलनेस के साथ बिल्कुल अपने अपने साथ काम कर सकते हैं और फिर हम यही उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला कि हम इस बुहरान से निकलें इंशाल्लाह और इंशाल्लाह देयर इज़ होप। तो बिल्कुल आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया शफ़क़त थैंक भाई यू कि आप बहुत आए बहुत शुक्रिया स्टूडियो में और आपने अपना टाइम निकाला और ये शेयर की नॉलेज। तो नाज़रीन सामीन इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा हाज़िर होंगे और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। हम सब की तरफ से, रेडियो हम वतन की तरफ से आप सबको खुदा हाफ़िज़। और खुदा हाफिज मेरी तरफ से जी, खुदा हाफ़िज़।